Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. I'm Ashish Bhargav and welcome to another episode of Daily News Analysis that we do from Monday to Friday at 11:30 a.m. In this newspaper analysis, we discuss about all the important articles majorly from the Hindu Indian Express, but we are not only confined to the Hindu Indian Express. Sometimes the news is also taken from the PIB, which is Press Information Bureau, and different government website as well. In newspaper analysis, we discuss about international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference, miscellaneous. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, and amendments, any bills. So that it is very, very important, especially for the law entrance exam. And one more thing that we discuss about a state initiative, which is very, very important. So let's start the session again. And I welcome each and everyone here. And I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. And here is the quote of the day that if your voice is high, only a few people will hear. If a thought is high, then many people will listen. And to inculcate this thought process, what exactly you need to do, you have to develop the temperament to read the newspaper, because newspaper is very, very essential for any person of, or usually majorly we can say that a person who is preparing for the competitive exams, right? And every day may not be good, but there is something good in every day. And just one small positive thought in the morning that can change your whole day, that is quote of Dalai Lama. And study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night, just remember that the feeling of success is the best thing in the entire world. And we take an initiative questions of the day, that is very, very important. So we can say that the questions of the day, the end of the session, that will ask to you 3 to 5 questions, and that gives you immense idea like what kind of questions that can be framed from the newspaper, right? So let's begin the very first article. And आज के जो articles हैं वो बहुत अच्छे हैं for your exam perspective. So if you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. So let's begin this article. Okay. So article हमारा क्या कहता है? इसमें article is mainly we discuss like what is talking about understanding India's Mental Health Care Act 2017. क्या है इस Health Care Act में? What are the various challenges for the implementation of Mental Health Care Act 2017? What did the National Human Rights Commission says about act execution across the country? So बात करें हम अगर NHRC की, National Human Rights Commission की, in a report flagged the inhuman and deplorable condition of all 46 government-run mental health care institutions across the country. और इसमें जो ये हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है वो कौन रिलीज करता है? MHA, विच इज़ कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज टैकलिंग ऑल द इंडियाज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, राइट? एंड द MHA, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ने सेंटर किया एजेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्नॉलेज द राइट टू लिव एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी अंडर सेक्शन 19 एज फोकस्ड ऑन रिहेबिलिटेशन. ये हमारे जो CEOs हैं MHI के, Mariawala Health Initiatives. So under section we can say 19 of this act क्या कहता है हमारा कि government was made responsible for creating opportunity to access less restrictive options for community living such as halfway homes, sheltered accommodation, rehabilitation homes and supported accommodation. इस एक्ट में और क्या चीज़ें मेंशन की गई है? This act also discourages using physical restraints like such as chaining, unmodified electroconvulsive therapy ECT, and pushes for right to hygiene, sanitation, food, recreation, privacy and infrastructure. आपको इसमें एक चीज़ और समझनी होगी कि इसमें challenges हमारे पास क्या क्या हैं. So while the MHA safeguards the rights of people in mental health care establishment, right, enforcement challenges remains almost 36.25% of residential service users जो हैं इसमें. State psychiatric facilities were found to be living in for 1 year more in these facilities according to a 2018 report by a Hans Foundation. Hans Foundation का मेन काम क्या होता है? Hans Foundation is thinking about the people's mental care, और कोविड के टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था.
राइट, तो ये आपको ध्यान रखनी है. समटाइम्स दे विल आस्क यू इन द MCQ फॉर्मेट लाइक हंस फाउंडेशन इज फॉर व्हाट. और अंडर द MHA all states are required to establish the state mental health authority and mental health review bodies that can further draft standards for mental health care institutes, oversee their functioning and ensure they comply with the act, right. And ये जो एक्ट हमारा दैट टेक्स ऑन ह्यूमन राइट लेंस बाय शिफ्टिंग द ऑब्लिगेशन ऑफ केयर ऑन टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. सो जबकि यहाँ पे सेक्शन 19 रिकॉग्नाइज करता राइट टू पीपल टू लिव इन अ पार्ट एंड नॉट टू बी सेग्रीगेट फ्रॉम सोसाइटी, राइट. एंड देयर हैव बीन नो कॉन्क्रीट एफर्ट्स टुवर्ड इम्प्लीमेंटेशन. सो यहाँ पे द dearth ऑफ ऑल्टरनेटिव्स कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज फर्दर कंप्लाइंसेस एक्सेस टू रिहेबिलिटेशन. ये हमारा मेन क्रक्स था जो हमने डिस्कस किया भी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के बारे में. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द एक्साइटमेंट ओवर द लिथियम फाइंड इन कश्मीर. सो कल भी आपकी न्यूज़पेपर में भी आप देखोगे डेली के आपके आर्टिकल्स आते रहेंगे, ठीक है, डिफरेंट न्यूज़पेपर में लाइक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, राइट. बट आपको इसमें इन शॉर्ट मैंने एक ही चीज़, आप एक बार इसके नोट्स को प्रिपेयर करो सो दैट कि अगर डेली आर्टिकल्स है उसमें देखो न्यू चीज़ें क्या है. इफ़ देयर इज समथिंग न्यू तो ऑब्वियस मैं उसको कवर करूँगा, अगर नहीं है कुछ न्यू तो मैं उसको क्या करता हूँ उसे मैं कवर नहीं करता हूँ. सो रीज़न बिहाइंड इट विल सेव योर टाइम, राइट. सो द नोट्स जो है बनाने के तरीके ऐसे ही होने चाहिए कि आप अगर आप डेली के डेली आर्टिकल्स आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसको नोट्स बनाने बैठ गए हम कि ठीक है हाँ जी इसको हम नोट्स बनाएंगे. सो द आइडिया इज़ बिहाइंड टू डू दिस कि इट विल सेव योर टाइम. यहाँ पे आपको ये देखनी होगी कि अ सेंस ऑफ यूफोरिया हैज़ इनगल्फ द कंट्री क्वाइट अंडरस्टैंडली आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस announced on Friday that Geological Survey of India has discovered lithium in Kashmir with refer to 5.9 million tons. और थर्ड पोजीशन हमारी लिथियम रिजर्व्स में आ गई पूरे वर्ल्ड में, ठीक है. लिथियम के बहुत सारे यूसेस होते हैं, जो जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, मोबाइल फ़ोन की बैटरीज होती हैं, सोलर पैनल में जो हम वर्क करते हैं, सब में लिथियम की यूसेस होते हैं. और हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज़ पे है. लिथियम एक मेटल होता है, लाइटेस्ट मेटल है एंड थर्ड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल. ये ध्यान रखना, जो आपका पीरियोडिक टेबल है दैट इज अ पोजीशन इज थर्ड एलिमेंट एंड आफ्टर हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर विच आर गैसेस. इट इज हाईली रिएक्टिव. इफ यू put a pellet of lithium in water, it will start sizzling like a pakoda in hot edible oil and could even catch fire. And it is extremely light and good donor of electrons. But to make batteries, lithium is mixed with other elements such as like cobalt, iron, phosphorus or sulfur. But it remains the main stuff in the lithium ion batteries. लिथियम को इंपोर्ट कैसे करते हैं? 2020-2021 में एज पर द गवर्नमेंट डेटा 173 crore worth of lithium metal and 8,800 crore worth of lithium batteries were imported. And these numbers will only increase exponentially according to नीति आयोग के जो reports हैं उसके according. The demand for advanced chemistry cell batteries is set to increase between 104 gigawatt and 260 gigawatt by 2030 compared with about 3 gigawatt hour now. So how significant is the GSI discovery? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एस्टिमेट किया द रिजर्व कुड कंटेन 5.9 मीट्रिक टन ऑफ लिथियम. और उससे क्या हो गया लाइक मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में इन 2021 एस्टिमेटेड इसमें 1600 टन जो थे वो हमें मिले थे यहाँ पे लिथियम माइंस. एंड टू पुट इन दिस पर्सपेक्टिव बोलिविया हैज़ 21, अर्जेंटीना के पास 17 मिलियन टन है, चिली के पास 9 मेट्रिक टन है एंड ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना. सो हमें ये चीज़ समझनी है कि GSI का जो सर्वे है यहाँ पे विच इज़ प्रिमरली सर्वे ऑफ विच इज़ सेकेंड स्टेप इन एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स आफ्टर G4. एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कश्मीर लिथियम टू गेट इन टू प्रोडक्ट्स. सो 7 years would be optimistic but 10 years looks feasible. So in the meantime India has relied on imports. Fortunately under the Indo-Australia FTA free trade agreements जो साइन किया हमने, लिथियम कैन बी इम्पोर्टेड ड्यूटी फ्री. इसीलिए हमारे कंट्री में जो लिथियम आती है बिकॉज के बहुत सारे यूसेस हैं. लिथियम इज़ यूज्ड इन फोन बैटरी ऑल्सो, इन सोलर पैनल ऑल्सो एंड थर्ड यूजेस इन EV व्हीकल्स. जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इसकी, ठीक है. तो इसके लिए आपको ये चीज़ देखनी होगी कि इसमें लिथियम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी. दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम. नाउ मूविंग फर्दर इज टॉकिंग अबाउट AMR. पहले हमें ये जानना है कि AMR क्या होता है. एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस. एंटी माइक्रोबियल सर मोबाइल फ़ोन विल बी चीपर.
Sarthak, exactly we can say mobile phone will be cheaper if the because we got the third largest lithium reserve in our country in Jammu and Kashmir, so that obvious that mobile phone will be cheaper. सो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब देखो, जब आपको किसी, सपोज करो आपको एक फीवर है, राइट, और फीवर के लिए आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ किए, तो उस टर्म को हम कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस। इन शॉर्ट अगर समझने की कोशिश करें तो मतलब एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट इज नॉन टू बी एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस इन शॉर्ट। सो यहाँ पे इसके अब निटिग्रिटी को समझनी होगी हमें। सो while the world is emerging from the acute phase of COVID-19 pandemic and the very harmful, the invisible pandemic is antimicrobial resistance that is unfortunately here to stay. So most countries understood in 2020 the present danger of COVID-19, forcing government including India to respond with speed and accuracy. अब हमें ये समझना होगा कि recent decades में while new drugs have revolutionized human healthcare, health experts have been struggling with disease-causing microbes that have become resistant to drug. Global public health response has been threatened due to rising misuse and overuse of antibiotics in humans and animals. So microbial resistance जो हमारा है, that is antibiotics has made it harder to treat infections such as pneumonia, tuberculosis, जैसे आपका blood poisoning हो गई, and several we can say several foodborne disease. और जो हमारा AMR है ऑल्सो इम्पोज अ ह्यूज हेल्थ कॉस्ट इन द पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर हॉस्पिटलिज्म। बहुत लॉन्ग टाइम तक एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की वजह से होता है ऐसा, जो एक बॉडी में एक डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड AMR। 2019 में AMR को एसोसिएट किया गया विद एन एस्टिमेटेड 4.5 मिलियन ह्यूमन डेथ्स की वजह से, ह्यूमन डेथ्स हुए इसकी वजह से, AMR की वजह से। एंड अभी जो हमारे इंडिया के पास है एज द करंट G20 प्रेसिडेंट सच एज कंट्री वनरेबल टू साइलेंट पेंडेमिक, सो जो हमारा देश का रोल है is critical in ensuring to AMR remains high on the global public health agenda. And India's commitment to the cause was evident at the third global high-level ministerial conference on antimicrobial resistance. और वो कब हुई थी? नवंबर 24 and 25 में, नवंबर 24 and 25 में हुई थी in Muscat, where over 30 countries adopted the Muscat ministerial manifesto on AMR. So manifesto recognized the need to accelerate political commitment in the implementation of One Health action for controlling the spread of AMR, और ये भी रिकॉग्नाइज करता है नीड ऑफ एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ AMR नॉट ओनली टू ह्यूमंस बट ऑल्सो ऑन एनिमल्स, बिकॉज आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम में जो स्प्रेड था वायरस का वो एनिमल से ह्यूमन तक भी फैला था, बिकॉज कोविड इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज का मतलब होता है जो एनिमल से आपका ह्यूमन में स्प्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड अ जूनोटिक डिजीज, राइट। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ पे जो थे फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर भरत प्रवीण ने, उन्होंने भी ये बात बताई कि AMR वॉज अ सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट एंड दैट कुड नॉट बी ओवर शैडोड बाय अदर कंपीटिंग पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज। नाउ हम बात करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ, और इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस ग्राम रिपोर्ट, ये सारी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। So antimicrobial resistance is the resistance required by any microorganism like virus, bacteria, fungi, parasite against antimicrobial drug such as antibiotics, antifungal, antivirals, antimalarials and anthelmintics that are used to treat infections. और World Health Organization identify क्या AMR को as one of the top 10 threat to the global health। अब यहाँ पे देख सकते हैं cause of एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ओवर प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स, जो मैंने आपको बता दी, पेशेंट नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, और वहाँ पे पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक, पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन प्रैक्टिस, लैक ऑफ रैपिड लेबोरेटरी टेस्ट की वजह से होता है, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर फॉर्म में, फिर बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस से वो हमारे जो क्या होती है हमारी बॉडी में होती है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, इसको ऐसे समझो, सपोज करो कि आपने एक एग्रीकल्चर लैंड पे आपने एक्सेसिव यूज़ किया फर्टिलाइज़र का, वो फर्टिलाइज़र से क्या होगा, प्लांट करोगे, इस प्लांट को कौन खाएगा, माइट भी उस प्लांट को एनिमल खाएगा, एनिमल से जो मिल्क यूज़ करते हैं वो हमारे तक पहुंचेगी, या हम जो प्रोडक्ट होगा वहाँ पे उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे, डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे व्हीट के प्रोडक्शन के लिए आपने एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ किया, तो फिर बाद में वो व्हीट हमारे तक पहुँचेगी, दैट इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस। मतलब डिफरेंट सिस्टम से एट द एंड में ह्यूमन चेन्स को डिस्टर्ब करना, फूड चेन, फूड वेव को डिस्टर्ब करना।
तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में उससे भी हमें नुकसान है, दैट इज कॉल्ड AMR। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? ग्रेटर नंबर ऑफ AMR deaths, currently 5 million per year, रूटीन ट्रीटमेंट बिकम रिस्कर टू परफॉर्म। इकोनॉमिक लॉस होगी। इकोनॉमिक लॉस क्यों होगी भाई? जो लोग होंगे अगर वो 5 to 10 डेज अगर हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करेंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, अगर वहाँ पर डेली विजिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी जो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी, राइट। एंड इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिया है इसके लिए? पहला लिया उन्होंने चेन्नई डिक्लेरेशन 2012 में, इट प्रमोट्स एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। रेड लाइन कैंपेन हुआ है, नेशनल एक्शन प्लान है AMR 2017 to 2021। ये तीन ही प्लान हमने अभी तक डिस्कस किया। ग्लोबली यूरोपियन यूनियन इन्होंने बैन किया प्रिवेंटिव मास मेडिकेशन इन एनिमल्स यूजिंग एंटीबायोटिक्स और अदर ड्रग्स को। यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए पहले एक्शन लिया, वन हेल्थ अप्रोच। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये 3 प्रोग्राम्स हैं, ग्लोबली यूज हुआ है, स्टेप टेकन, एंड इंडिया ने ये 3 स्टेप्स लिए, चेन्नई, रेड लाइन और नेशनल एक्शन प्लान। I hope this one is very clear for each and everyone. Now the third one we have to understand. Third article, eyes on China. Cabinet clears 7 ITBP battalions. So over 9,000 personnel to be recruited for deployment in Arunachal Pradesh. हमें भी इसमें समझने वाली चीज़ क्या है, and what are the important takeaways for the exam? वो क्या है हमारा? यहाँ पर देखो, इसमें ऐसा क्या हुआ, जो ITBP ने allocate किया 4,800 करोड़ अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या होते हैं, इसको समझना है हमने। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में हम गांव के टूरिज्म को हम स्ट्रेंथन करते हैं, राइट, तो कि वहाँ की गांव की इकॉनमी अच्छी हो। तो आप ये समझो कि अगर गांव की इकॉनमी आपकी अच्छी होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी पे, डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी अच्छी होगी तो उसका इम्पैक्ट होगा आपके स्टेट की इकॉनमी पे, स्टेट की इकॉनमी आपकी अच्छी होगी तो उसका इम्पैक्ट होगा हमारे किसके ऊपर, नेशनल इकॉनमी पे। So Cabinet Committee on Security Board ने that is cleared proposal for raising the new ITBP battalions during the meeting chaired by Prime Minister Modi. So जो हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स है टू स्टॉप माइग्रेशंस एंड बूस्ट टूरिज्म इन विलेज अलॉन्ग द बॉर्डर, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे लोगों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है सो दैट कि वहाँ पे उनकी इकॉनमी अच्छी हो। और आपको पता है यहाँ पे कि इंडिया और चाइना का ट्रूप्स जो है दैट आर एंगेज्ड इन द समवेयर इन द स्टैंड ऑफ फ्रॉम सेवरल लोकेशन ईस्टर्न लद्दाख सिंस अप्रैल से मई तक बीच में। सो इस प्रोग्राम में क्या है, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो वो हमने कैबिनेट मिनिस्टर में डिसाइड किया। और ITBP जो हमारा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस विच इज कॉल्ड फुल फॉर्म ऑफ ITBP इज अ पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में मार्क मोहन लाइन इंडिया चाइना को, यहाँ पे नेपाल बॉर्डर है। और ये पर अगर आप देखो यहाँ पे तो ये हमारा तिब्बत का एरिया है। तो यहाँ पे ITBP के जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ यहाँ पे हैं स्टार्ट्स हुए हैं, मतलब यहाँ पे मेंशन की हुई है। और ये जो एरिया है यहाँ पे अरुणाचल, और यहाँ पे आपका चिकन नेक कॉरिडोर है इसके पास, दैट इज कॉल्ड अ चिकन नेक कॉरिडोर। चिकन नेक कॉरिडोर जो है बेसिकली इज लिंकिंग टू द इंटायर साउथ ईस्टर्न पार्ट। ये आपका सिलीगुड़ी के पास है विच इज बॉर्डर ऑफ बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो चिकन नेक कॉरिडोर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया परस्पेक्टिव बिकॉज अगर यहाँ से चाइना की जो BRT है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अगर वो अटैच होती तो ऑब्वियसली चाइना का कनेक्शन खत्म हो सकता है। मतलब हमारा जो कनेक्शन है नॉर्थ ईस्ट के साथ, जो हमारा बाउंड्री है वो कम्प्लीटली खत्म हो सकती है। सिर्फ चिकन नेक का मतलब है बहुत पतली सी कॉरिडोर है वहाँ पे, राइट। HAL टू प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल सपोर्ट टू MQ-90B ड्रोन इंजन इन इंडिया। अब ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं HAL है क्या। ये जो है बेटा आपका HAL, वो फर्स्ट हमारा क्या है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन किया था, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रचंड, राइट। सो अभी इंडिया ने परचेज करने की सोची है प्रेडेटर रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS फ्रॉम द US। सो US से अभी हम खरीदने वाले हैं RPAS, इसको आप ऐसे समझो। RPAS क्या होता है आपका, बेसिकली रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो हमारा MQ-9B है, गार्जियन हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस HAL, RPAS क्या करेगी, दैट विल सपोर्ट बाय द HAL इंजन डिवीजन फॉर द इंडियन मार्केट, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अभी इंडिजिनस डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे, अपने बजट में भी देखा होगा कि हमने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स को लॉन्च किया है, राइट। सो HAL एंड जर्मनी बेस्ड
हैंसन डॉट ने अनाउंस किया इज अ कोलैबोरेशन अग्रीमेंट कवरिंग डिज़ाइन IPR ट्रांसफर फॉर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम विच इज़ OAS. नथिंग मोर नीड टू बी अंडरस्टैंड इन दिस आर्टिकल, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको इसमें जाननी है. नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिजिनस करियर विक्रांत विल बी ऑपरेशनल बाय ईयर एंड नेवी चीफ. पहले हमें ये जानना हो कि नेवी चीफ है कौन यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे आर हरि कुमार. तो आपको ये जानना है आर हरि कुमार इज अ नेवल चीफ. ठीक है, अब यहाँ पे समझते कंट्री की फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर है INS विक्रांत विच इज अंडरगोइंग एविएशन ट्रायल्स, will be fully operational by the year end and all efforts are to make it happen. The chief of the naval staff R हरि कुमार उन्होंने ये चीज़ बताई. और MiG MiG-29K जो है और LCA नेवी, ये दोनों लॉन्च होगी. एंड इट इज़ accomplishment that the LCA which landed on INS विक्रांत within 6 months of its commission. और जनवरी 2022 में DRDO विच इज़ कॉल्ड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया LCA एंड INS विक्रांत को. थोड़ी बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन जानने की ज़रूरत है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेकवेज. यहाँ पे देखो फरवरी 2009 में कीप द शिप इज़ लेट. अगस्त 2013 में शिप को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया वाटर में. INS विक्रांत के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर है. ठीक है, जो कंट्री में ही बनाएगी, हमने किसी से कंट्री से हेल्प नहीं ली इसमें. ठीक है, नवंबर 2022 में जो उसका बेसिस था ट्रायल कंप्लीट हुआ. जुलाई 2022 में सी ट्रायल्स कंप्लीट हुए. जुलाई 22 में डिलीवरी एक्सेप्टेंस हुआ बाय नेवी. सितंबर 2022 में कमीशनिंग एट INS विक्रांत. लेंथ जो है इस शिप की 262.5 है, हाइट 61.6, फ्लाइट डेक एरिया 12,500 और डिप्लेसमेंट है आपका 42,800 टन्स. और ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है विच इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बट आपको यहाँ पे ये देखनी है कि इफ़ वन वर्ड वॉक थ्रू द शिप पैसेज एंड लॉबीज द पर्सन कुड क्लॉक अबाउट 12 किलोमीटर. ठीक है, इतनी इसकी लेंथ है. एंड वी कैन सी 30 फ्लाइट एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग MiG-29 एंड कमोव जो है वो चॉपर्स इसमें इसके अकॉर्डिंग उसके डिज़ाइन को प्रिपेयर किया गया है. INS विक्रमादित्य, इसमें आपको ये देखने की यहाँ पे MiG-29 के 24 है, 10 हेलीकॉप्टर्स है, 34 एयरक्राफ्ट है. इसमें मैक्सिमम स्पीड इसकी 30 नॉट्स है. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी 44,570 टन है इसकी. इतनी डेप्थ में इन्फॉर्मेशन नहीं पूछते, बस जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन. फिर अगेन टाइम टू फोस्टर डिफेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द यस्टरडे न्यूज़पेपर एनालिसिस. UAE विच इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इविंस किया इंटरेस्ट इन आकाश मिसाइल सिस्टम. तो उसके लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या शिफ्ट किया. विंग इंडिया एज अ नेट इम्पोर्टर टू अ नेट एक्सपोर्टर ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. राइट, जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स है दैट इज टू रिकॉर्ड $1.6 बिलियन इन 2021 एंड 2022. बाय 2023 इट विल सरपास $2.2 बिलियन. और ये क्रेडिटेबल एफर्ट्स है विद अ सुटेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क हैव हेल्प एक्सप्लोर फ्रेगमेंटेड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़. और यहाँ पे अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट स्टेटस है दैट इज इंप्रूविंग इन रिसेंट ईयर्स एंड विद द कंट्रीज एमर्जिंग एज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो है दैट इज हाईएस्ट एवर 13,000 करोड़ रुपीज़ हमने खर्च की 2021-2022 में. और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 70% एक्सपोर्ट्स है, वाइल पब्लिक सेक्टर फर्म्स जो है अकाउंटेड फॉर द रेस्ट. सो दैट वॉज ए इंपॉर्टेंट टेकवेज. अगर हम बात करें इसमें यहाँ पे कि लाइक इंडिया ने क्या क्या एक्सपोर्ट प्रोडक्ट यूज़ किया इसमें, लाइक ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, एवियोनिक्स कंट्रीज जैसे कि मालदीव्स हो गया, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इजराइल, इजिप्ट एंड UAE एंड चिली. सो इंडिया हैज़ फेल्ड टू कन्वर्ट इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इजिप्ट. ठीक है, और हमने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम को भी लॉन्च किया. So these countries have expressed interest in BrahMos missile system, but India has not been able to convert this interest into business action. And our country also been unsuccessful in clinching the big naval defense borders from countries like Oman, Myanmar, Mauritius and Vietnam.
This same article we have discussed, antimicrobial resistance. इसमें है टैक्सिंग विंडफॉल प्रॉफिट्स ऑफ ऑयल कंपनीज. February 3 को यूनियन गवर्नमेंट ने हाइड किया विंडफॉल प्रॉफिट. विंडफॉल क्या होता है? जब कंपनी किसी और चीज़ से पैसे बना रही होती है, पैसे कमा रही होती है, उसको हम कहते हैं विंडफॉल टैक्स. ठीक है. सो विंडफॉल टैक्स विच मीन्स कंपनी इज नॉट मेड फॉर दैट प्रोडक्ट, बट उसको किसी न किसी अदर तरीके से उसको क्या हो रही है, बेनिफिट हो रही है. दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स. So windfall profits refers to a anticipated spike in earnings of an entity resulting from an exogenous events which could not be one-off and prolonged. And Russia's action in Ukraine were central to the volatility observed in oil market in the previous calendar. Now बात करते हैं यहाँ पे windfall tax की. विंडफॉल टैक्स का मतलब जब कोई कंपनी बेनिफिट करती फ्रॉम समथिंग दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, द फाइनेंशियल गेन दैट इनश्यू इज कॉल्ड विंडफॉल प्रॉफिट्स. Governments typically levy one time tax over the above the normal rate of tax on such profits, and that is called windfall tax. Since energy companies are gaining profit not because of any improvements in their process but because of their geopolitical situation, many governments are considering to impose sorry बहुत सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे वो विंडफॉल टैक्स, बिकॉज रशिया यूक्रेन की वजह से बहुत सारी जो कंपनीज हैं सॉरी उनको क्या हो रही है कि वो बेनिफिट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स. तो गवर्नमेंट ने इसको फरवरी में ये चीज़ लॉन्च करी कि आपको विंडफॉल टैक्स के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको टैक्स पे करनी होंगी, एंड दिस विल बूस्ट द गवर्नमेंट फाइनेंस एंड हेल्प फंड एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ रैम्पेंट इन्फ्लेशन. Now it's time to questions of the day. That is very very important, and here we'll ask you 5 questions that will give you the immense idea that what kind of question you need to prepare for that. Don't worry about it. अगर आपसे कोई भी questions गलत या सही होते हैं, गलत भी हो, don't worry, try to rectify your mistake, and if it is correct, be happy, you are on the right path. So here is the very first question. Right to equality in the Indian Constitution does not include. So try to find it, or the word is here does not. Equality of opportunity in employment, prohibition on discrimination on ground of religion, abolition of titles, right to accused and convicts. Try to attempt the questions. Here D is the right answer. So right to equality includes the following laws: equality before law, equal protection of laws, prohibition of discrimination on ground of religion, equal access of to shops, bathing ghats, hotels, equality of opportunity in employment, abolition of titles, abolition of untouchability, which is Article 17 of the Indian Constitution. Next one. A democratic constitution would lose its credibility if there's a hypothetical condition is there. It is heavily based on constitution of another nation. It is not based on secular ideas. The people behind framing the constitution were unelected. It centralized power from the federal units into the union government. So the answer will be here C option. Indian Constitution borrows heavily from the constitution of other nations. Suppose if the Constituent Assembly of India consisted of British administrator, the only members of the princely states, we could not have acknowledged the framing of constitution as just and democratic. So C was the right answer. Here is regarding Rajya Sabha election. The third schedule of the constitution provides for allocation of Rajya Sabha seats to the state and union territories on the basis of population of each state. Rajya Sabha's member of parliament are elected by the elected members of state assemblies through a system of proportional representation by means of single transferable vote, and a nominated member of Rajya Sabha may not join a political party after 6 months of taking a seat to avoid disqualification. It seems to be difficult, but once you start practicing the difficult question, it makes you very strong. So in your, if your real exam, if the questions level is
easy, moderate, or high, you would be able to solve the questions. So B is the right answer. Exactly. So the fourth schedule of the Constitution provides the allocation of Rajya Sabha seats to the state and union territories on the basis of population of the each state. Rajya Sabha member of Parliament MPs and elected member of Legislative Assembly through an indirect election. On Article 80, Clause 4 provides that members shall be elected by the elected members of state assemblies through a system of proportional representation by means of single transfer vote, and the nominated members may join a party within 6 months of taking a seat. Here is the seed capital. It's very important. Many times we have discussed in newspaper analysis. Essential capital required to procure seed for cultivation in monsoon season. It is capital required to make initial investment in stock market. Bailout capital given by the government for public sector enterprises. It is an early capital required to start a new business. So D is the right answer. That is a early capital that will be required to start a new business, seed capital. So seed capital is the funding required to get a new business started, और जो initial funding होती है which usually comes from the business owners and perhaps friends and family supports preliminary activities such as market research, product research and development, and business plan development. Fifth one question is asking about defines the biosphere. It is upper region of lithosphere. It is narrow zone where land, water and air comes together to contain life forms. The lower atmospheric region near the hydrosphere. It is a biotic component of all forms on Earth. So B is the right answer. A solid portion of the earth which we live is called a lithosphere. Gaseous layers that surround us. The earth, it is atmosphere where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Where oxygen is how many percent? 21%. Nitrogen is 78% and even is carbon dioxide. So water covers a very big area of Earth's surface. The hydrosphere comprises water in all forms, that is ice, water and water vapor. The biosphere is a narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. That's why B was the right answer. It is a narrow zone where land, water and air come together to contain life forms. So I hope this one is very clear for each and everyone. If you have any questions, please let me know in the comment section. If you'd like to ask anything. Biosphere is a narrow zone. Okay, so I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any question, please let me know in the comment section. And if you are new in this channel, please subscribe the channel as well. And we'll meet you on the Monday session of daily newspaper analysis. And stay tuned. My name is Ashish Bhargav. मिलते हैं Monday को. Stay tuned. Take care. अपना ख्याल रखें. And if you have any questions, please let me know in the comment section. And subscribe the channel as well. Thank you so much for joining with us. Bye bye and take care till then.